Question: How does it feel that you're kind of becoming like a mainstream comic now? What an insult. The way I would put it is, अभी मैं गुमनाम लाश नहीं मरूंगा. Like, I have a friend who did a joke on an actor. He uploaded like a 10-minute bit. Funny as all right. The actor's agency contacted him that take it down. My friend took it down. His argument is the actor and I are not playing in the same medium for us to compete. मैंने stand up bit डाला है. The actor doesn't have the skill set to compete stand up wise with me and give me a reply. That is why I took it down. जैसा ये होता है कि anytime somebody gets in trouble for saying something और उस पे physical violence का threat आता है, लोग बोलते हैं अरे इसने बोला, वो मार क्यों रहा है, तू भी वर्ड से बात करना. This is a very privileged argument because मैं तुझे बोल रहा हूँ जो मेरी स्किल सेट है, तो उसमें आके मेरे से compete कर रहा हूँ. कोई गंदी वाली गाली देके चला जाए. बहुत मेरे को एक बार एक कमेंट आया था, वन ऑफ द फनीएस्ट कमेंट्स. द कमेंट वाज ये आदमियों का फीमेल कॉमिक है. आई डोंट नो इफ यू गेट व्हाट दैट डूड इट इज. And I was like, this guy is insane. You can't be funnier than trolls, I've realized. Because they are just funny in 10 seconds. एक joke perfect करने को बहुत time लगता है. तो to try that one line, which comes at the 12th minute, you have to repeat 11 minutes 30 seconds like a parrot. And you have to do things to make it interesting for yourself. Like if I'm getting on stage and I know मेरे पास कुछ खास नया है नहीं try करने को, I won't remove the mic from the mic stand. I know a comic जो उल्टा खड़े के perform किया है. Like him and the audience, everyone is looking at the wall. And he's like, this is how I'm going to do my 10 minutes. क्या मिलता है करके? उसके इसमें पॉइंट था, जो मैं करता हूँ उसमें कुछ पॉइंट नहीं. I'm just like, let's make it more exciting. Also because when you are not in your comfort zone, you are more conscious of the state you are in, and उसमें शायद तुम्हें एक हाथ नई लाइन मिल जाए. If I want to develop that eye, कैसे करूँ? Pick up a newspaper, find 5 news articles, write jokes on that. The setups are given to you. You have to only work on the punchline. These are few exercises. मतलब अगर तुम्हें punchline नहीं मिल रहा है तो बस पूरा का पूरा headline पढ़ लो. That's punchline enough. But demonetize कराएगा ये. Should someone consider a career in stand-up comedy? there is very little culture of a working comic in India. It's either you're an open micer who doesn't sell tickets, or even if you sell tickets, they don't amount to anything, or you're a viral A-lister. They can pick up any venue and sell that venue. Some comics are huge. Like उतना तो भाजपा के रैली में भी लोग नहीं आते. अगर तू ऐसा लोकल इलेक्शन में देखेगा जितने कॉमिक्स पुल कर रहे, some of these numbers are nuts. How do you measure success in your industry? I don't know. कोई लोग के तो हजारों टिकट बेच के भी सक्सेस फील नहीं हो रहा है. तो and I'm not taking digs at anyone. There is a void. 1,000 people laughing at you from 8 o'clock to 10:30, 11. But at 11:30, 12, you are back in your room by yourself. You see the high and the crash that comes right after. तू जो भी तेरे दिमाग का रॉक स्टार, कूल शाना जो भी तू है, वो तू स्टेज से उतरा रात के 12 बजे. तू वही है जिसका गाड़ी का टायर पंचर हो गया, ट्रैफिक में अटक रहा है. अगर तू रिक्शा में जा रहा है, साइड की गाड़ी तेरे पे कीचड़ उड़ा दी. Like you are a nobody. Alright, and that's when you can't look at your Instagram and be like, oh, I have these many followers, मेरे साथ क्यों हुआ? You're still a commoner. थोड़ा आइसोलेटिंग तो है. Fulfilling है? Fulfilling तो हाँ 100%. You get to say whatever you feel like. That's not true. That I get to say what I feel like because that's how I want to do stand-up. I read the news bothers me, I talk about the news. There are people who read the news, they get bothered by the news, they still go on stage and talk about tiffin and school and whatever. I'm sure that's very depressing to mask your opinion so that you can make money. Today I am fulfilled with stand-up because I am able to say what I want to say. Comedy is inherently anti-establishment. अपने यहाँ पे तो नहीं है. सब क्या प्रिविलेज अपर कास्ट लोग ही कॉमेडी कर रहे हैं. हमेशा उबर ड्राइवर पे ही जोक बनता है, हमेशा बाई पे ही जोक बनता है. तुम उबर के मालिक पे जोक बनाओ ना. अरे चलो अंबानी के बेटे को मोटा ही बुला दो, उतना ही स्पाइन दिखा दो. वो लोग तो उतना भी नहीं कर रहे. मैं तो बोल भी नहीं रहा प्रॉपर पॉलिटिक्स के हिसाब से जोक करो. रास्ते पे भिखारी है, उसका पेट बड़ा है, अभी फिर तुझे भूख कैसे लग रही है, मोटे खाएगा क्या. इज अलोंग दोज लाइंस ओनली. वेरी लिटिल इज पंचिंग अप. लोग कहते हैं कॉमेडी खतरे में है. मुझे लगता है कॉमेडी खतरे में है और वो खतरा खराब कॉमेडियन से है. कुणाल कामरा के बारे में बात कर रहे हैं. बिल्कुल नहीं. Do I get a kick out of offending people? No. Do I get a kick out of saying things people will disagree with? Yes. I'm giving a joke. You are taking offense. I'm not giving offense. देख, laughter is more powerful than offending someone. Because तुम offense control कर सकते हो. तुम्हें गुस्सा आया तुम कंट्रोल कर सकते हो. अगर तुम्हें हंसी आई कोई चीज पर तुम कंट्रोल नहीं कर सकते. अगर तुम दोगले हो तो मैं तुम्हारे दोगलेपन पे अगर तुम्हें हंसा दिया, I made my point. We agreed on a service कि तुम्हें हंसना है, मुझे तुम्हें हंसाना है. मैंने तुम्हें हंसा दिया और मैंने मेरा पॉइंट भी रख दिया. That is more powerful than मैं जाके किसी के उंगली करूँ, वो भड़क जाए, ऑफेंस ले ले. I don't want to do that. Also, when you start off, you have to pay to get on stage. What? Yes, it's a very classist, gate-kept art form in most of the first-year places.
कि अगर आपको स्टेज पर चढ़ना, आपको परफॉर्म करने के 250 या 300 रुपए देने पड़ते हैं, जिससे आप 4 मिनट करो, आप अपना 4 मिनट करके मटेरियल बिल्ड करो, फिर 6-8 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद आपके स्किल सेट और आपके नेटवर्किंग पे डिपेंड करते हुए यू गेट टू डू 8-minute spots where you don't have to pay. So to be a good comic, you have to become an influencer ultimately. No, to become a known comic you have to become an influencer. Good is very different. So थोड़ा सा हाई एनर्जी। नहीं मुझे करनी है मेरे को भी खाना खाने के बाद आलस तो आ रहा है। मुझे तो स्टेज पे चढ़ना है, इसके बाद 2 शोज करने हैं। कल मेरे सेकंड शो में इतना बड़ा फकअप हो गया, मैंने फर्स्ट शो का जोक सेकंड शो में किया एंड देन मैं भूल गया ये शो में किया कि नहीं, सो आई डिड द सेम जोक इन द सेकंड शो सेकंड टाइम एंड एवरीवन इज लाइक लौड़े क्या कर रहे हो, यू जस्ट डिड दैट जोक। You know what? I'm keeping that story in. That's how we're starting. Masoom, I have a very stupid question. By the way, ladies and gentlemen, Masoom Rajwani in the house. थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी। इन्होंने खाना खाया है और अभी बहुत स्लो हो गए हैं। मेरे को बहुत नींद आ रहा है। So, Masoom, why are you funny? Am I funny? I don't know. That's a big burden to put on me. Funny तो लोग हंसते तो हैं यार। अरे पर लोग तो किस पे भी हंसते हैं यार, मैं वो यार्ड स्टिक से नहीं जा सकता हूँ। I know this. I'm not funny in a friend circle. Like in conversation, I'm not the funniest guy. Like I can if I want to be, but it doesn't come naturally to me. How does that work? Stage funny is very different. Stage funny, the power dynamics are different. तुम्हारे पास माइक है, ऑडियंस तुम्हें सुन रही है। Authority? अथॉरिटी प्लस ऑल्सो देयर इज क्राफ्ट। देख तू एक फ्रेंड सर्कल में, मुझे ट्रैवल करने के बाद ये समझा था, अगर मैं मुंबई में अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट कर रहा हूँ तो मैं वहां पे कांदा बोलूंगा तो लोगों को समझेगा इट मीन्स अनियन। अगर मैं ट्रैवल कर रहा हूँ आई हैव टू यूज द वर्ड प्याज फॉर पीपल टू गेट इट। सो एज सून एज यू गेट ऑन स्टेज एंड यू आर टॉकिंग टू a diverse audience, the context of your joke has to be proper. So it's more structured. There is more suspense. The reveal is on point. तू स्टेज पे नहीं कर सकता अरे अरे एक सेकंड में बता दूं इसके पहले क्या हुआ था। You don't have that leeway. The story has to be said the way it is structured. You can't do back and forth. So that's a skill anyone can polish. It's a skill. कि पहला सेटअप आएगा, फिर प्रेमिस तुम सेटअप करो, कॉन्टेक्स्ट, फिर पंच लाइन आएगी, पंच लाइन फ्लिप होएगी, उसमें रूल ऑफ 3 करके देयर आर वेज टू राइट जोक्स, 1 2 द थर्ड वन इज द फ्लिप। देयर आर समथिंग कॉल्ड एज टैग्स, जो पंच लाइन के बाद तुम एक और पंच लाइन बोलते हो जो अपलॉज, जो लाफ को अपलॉज में टर्न करता है, दैट्स कॉल्ड अ टैग। सम पीपल राइट मल्टीपल टैग्स, सो दे जस्ट कीप हिटिंग हार्ड। तो दिस इज अ स्ट्रक्चर जो तुम ऑफ स्टेज नहीं करते हो। ऑफ स्टेज पावर डायनामिक्स भी अलग रहता है। ऑफ स्टेज अगर तुम दोस्तों के साथ मस्ती कर रहे हो तो उसमें तुम बदतमीजी कर सकते हो, तुम्हें ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट है, ज़्यादा लीवे है, there's a chance of them giving back, so you say worse things. Stage wala funny is very different. Like my jokes, my whatever, I wouldn't call it satire, whatever political jokes I do, they work better if there are more people in the audience because the guilt is divided. If like oh, that makes sense. if I am doing an open mic or even like when I wasn't pulling, give me an example of a joke. This joke is pretty old. मैंने पापा को जाके बोला 50,000 रुपये तो फीस भरनी है, 50,000 रुपया। एंड नेक्स्ट डे ही केम एंड टोल्ड मी सैटरडे को नाखून नहीं काटना चाहिए। हम लोग पापा यही होगा अगर 200 रुपये के एजुकेशन से पढ़ोगे तो like the joke is essentially on everyone's parents because the fee structure was different then and most parents are superstitious. I do jokes on my parents because मैं तुम्हारे बाप को अटैक नहीं कर सकता हूँ, नहीं तो तुम रिफंड मांगोगे। बट अगर ऑडियंस का साइज कम है then मैं उसको अपने ऊपर ले सकता हूँ। yes, अपने ऊपर एज इन देख वो रूम में फिर वो रिदम और वेव नहीं है कि लाफ आया तो द लाफ राइड्स द रूम, दिस चिटर चैटर, 1-2 लोग ताली बजाएंगे, इट्स जस्ट 4 or 5 people, so the laugh peaks and dies very quickly. And then they can also feel attacked. Yeah, when I was watching your special तो मुझे लग रहा था कि हाँ कॉल आउट तो मुझे पर्टिकुलरली 2 या 3 बार तो हुआ ही है। हाँ, but talking about your special, how does it feel that
You're kind of becoming like a mainstream comic now. What an insult. More people recognize me. More people recognize me than before. That's how I would put it. How's The that way work? I would put it is, अभी मैं गुमनाम लाश नहीं मरूंगा. Like, if I die, they will report some comic called Masoom Rajwani died. It wouldn't be like एक बस पलटी हो गई और 4 लोग मर गए. Like, I will, my name, I hope that I am recognized. कोई responsibility आती है additional? Responsibility as in, I'll ask you, I'll put it in context. You are doing essentially the same thing. You're observing the world and you're just pointing out the sarcasm, the dichotomies of it. होता क्या है, your input is same, but अब output, if we're talking output in terms of views or the amount of people, the eyeballs that are watching or tuning into your content are growing. yeah. With the changing output, with similar input, let's say, does that make you feel you're more responsible? You have to be more responsible or something like that? देख, मुझे ये समझता है, the wider audience you perform for, the more victims you end up performing for. So like my words can't be that Elaborate. brash. Like अगर मैं कर रहा हूँ कोई joke ऐसे ही ironic, dark, जो भी मेरा justification है, I'm doing a joke that has harassment or something. I have to be more sensitive because statistically more people who have been harassed are now watching me. Like I know that's true on paper. मुझे जाके अगर मेरा वीडियो लाख लोगों ने देखा, मुझे लाख लोगों को पूछने की जरूरत नहीं है. I just know that. तो वैसी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि I can't put this out there. I can't do a punch down joke. But you never punch down in jokes, right? That's not true. That's not true. Of course I started with What is punching up and punching down? थोड़ा concept उसका explain करूँ. Any person with lesser privilege by birth or right now, or who doesn't have the same power to answer back to me immediately right there and then, is punching down. So let's say अगर आप किसी millionaire या billionaire पे joke मारते हैं, that's punching up. तो ये भी debatable है. I have a friend who did a joke on an actor. He uploaded like a 10-minute bit. Fucking funny as fuck, alright? The actor's agency contacted him that take it down. My friend took it down. His argument is the actor and I are not playing in the same medium for us to compete. मैंने stand up bit डाला है. The actor doesn't have the skill set to compete stand up wise with me and give me a reply. That is why I took it down. I disagree, but there is a counter argument to this. Billionaires का मजाक उड़ाना चाहिए 100. वो ये क्या था? And it makes sense and it doesn't as moving on. उसका थोड़ा सा point तो था. जैसा ये होता है कि any time somebody gets in trouble for saying something, और उस पे physical violence का threat आता है, लोग बोलते हैं अरे इसने बोला, वो मार क्यों रहा है, तू भी word से बात करना. This is a very privileged argument because मैं तुझे बोल रहा हूँ जो मेरी skill set है, तो उसमें आके मेरे से compete कर. Correct. It's the same thing that I've felt जब ये अंबानी की शादी हो रही थी ना, अनंत की. Ugly, awful wedding, yeah. But जब रोका हुआ था, I think शायद February 2024 की बात है, तो तब people were just hating on अनंत अंबानी. वनतारा वाला जो हुआ था सब कुछ था और उसके बाद they were hating. और तब मुझे थोड़ा सा weird लग रहा था कि यार ये भी तो sort of victim ही है, बहुत privileged victim है. But ये beneficiary of oppression है. वो तो है. ये बहुत बड़ा beneficiary of oppression है. Also, so that's punching up. But there is an argument to be made कि वो थोड़ा सा body dysmorphed है. You know what the problem with fat shaming Anant Ambani is? It is that you look away from everything that he's actively doing wrong. You get what I'm saying? ठीक है, he is not fat out of choice, but he is doing other things out of choice that you're avoiding because you want to do a cheap joke on his fatness. That guy is flawed. Yeah. उसका बाप मीडिया कंट्रोल करता है. ये लोग अबे हाथी को खिचड़ी खिला रहा है, खुद का डाइट हाथी को खिला रहा है. Like there are so many things. नहीं, पर राहुल कंवल ने भी खाई थी. Yeah, just see how the media is manipulated. ये लोग अबे उस दिन क्राइम नहीं हुआ था क्या?
रोज क्राइम होता है ना. हमारे जर्नलिस्ट वो सब छोड़ के उसका वेडिंग कवर कर रहे हैं, जाके हाथी लोग के साथ फोटो ले रहे हैं. 12 rapes every day, I think. Yeah, whatever the statistic is, I'm like, how can you avoid that and go cover this guy? There is so much to criticize about this guy. Making fun of his fatness is wrong. Yeah. But making fun of Ambani is 100% punching up. What do you think about just in general fat shaming? I have done it. Am I proud of it? No. I have done it on stage also. I like, अगर कोई आके मेरे को बोलेगा ये गलत है, then I'll be like, हाँ गलत तो है, मैं उसमें कुछ फाइट नहीं करता. It's a learning curve. हम लोग को पहले अब फैट शेमिंग तो अभी बताया जा रहा है, बचपन में तो that's how काली. that's how people were bonding. तो now I know and I full well acknowledge कि ये सब नहीं करना चाहिए. फैट शेमिंग सिर्फ उधर तक थोड़ी होता है कि मैंने तेरे को मोटा बुला दिया. देयर आर women जिनकी शादी नहीं हो रही है बिकॉज दे हैव मेडिकल कंडीशंस. यार पर You वो तो तो don't बहुत know. छोटा एग्जांपल है ना. नहीं, बट मैं बोल रहा हूँ अगर 1-on-1 फैट शेमिंग देखे कोई, अगर चल के जा रहा है तूने उसको बोल दिया मोटा, देखो उसका कॉन्टेक्स्ट थोड़ी पता है, देखो उसका ट्रॉमा नहीं पता है. Playing the devil's advocate here, देखो it doesn't happen overnight. कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है, but I think getting fat is a privileged choice. I mean, I disagree with that. There people eat their weight through depression. If you lose a parent, you have no other coping mechanism. You eat your way to the other side. But ये examples कम है या ज़्यादा है? देख ऐसा भी है कि some people are just fat out of stress. Stress से भी obesity तो होती है, तो that doesn't mean this guy is just eating his Feelings. को genuinely कुछ problem रहेगा. Dude, I know people, dude, there are homeless people on the streets with big bellies. ये लोग तो खाने का भीख मांग रहे हैं यार. तो just because मोटा है इसका मतलब खाता है, that can't be the yardstick. I'm corrected. Yeah, but like अगर कोई मोटा आदमी खुद का मजाक उड़ा रहा है तो ठीक है. तुम तो खुद का मजाक उड़ा ही सकते हो. That's fine. So, moving on to the topic. What a weird monologue. So, see, there are a few jokes that you crack. जैसे I will not do them justice, but मैं उसी क्लिप चला देता हूँ, but क्लिप अभी चला दूंगा for the audience. And जैसे गार्डन में कचरा, डज़न में बच्चा, बॉडी ठंडी, पिज्ज़ा गरम, इस तरह के जो जोक्स हैं, it requires a lot of observation. And you do realize that inherently हम जैसे नॉर्मल लोग, हमारे पास वो आई नहीं होती है. How do you see You know these why? things? It's because you have a real job and you're thinking about that. I have nothing to do. This is what I do. You could have also gotten a job, no? Yeah. See, what we're saying is the chicken and egg situation. कि पहले क्या आया? पहले ऑब्जर्वेशन आया तभी तो स्टेज पे गए. अगर मेरे पास वो ऑब्जर्वेशन नहीं, पहले ऑब्जर्वेशन नहीं आया. पहले कूल बनने का कीड़ा आया और इनसिक्योरिटी, अटेंशन वाली इनसिक्योरिटी आई कि आई वांट पीपल टू लिसन टू मी बिकॉज आई हैव समथिंग इंपॉर्टेंट टू से. एंड व्हेन पीपल वर लिसनिंग, टाइमलाइन बताओ इसकी. 2015, 2016. So this is after in college? I dropped out of college. I was studying law. Then I saw videos of AIB and I was like, I want to do this. So I dropped out. I started working at a place. I used to do the production, mic, sound, tech check, arrange chairs, run the show, check tickets. I used to do that. And like I used to perform when the show had started, like half an hour into the show, nobody is entering. So the gate is done. Then I used to go in, watch people perform, do like 4 minutes, 5 minutes. Once you get on stage, you want people to listen to you. And once people are listening to you, that's when you realize, fuck, I have nothing to say. And when you realize that, that's when you want to say something that's valuable. Some people don't think, some people are like, yeah, this is what I had to say. जो सबको बोलना है वो भी तो अलग चीज़ है ना. अभी मेरा इससे पहले जो मैंने पॉडकास्ट किया था, लिटरली 2 दिन पहले, इट वाज विद द एमसी ऑफ G20 समिट. उन्होंने 1000+ शो करे हैं. यू माइट से दिस इज नॉट अ फ्लेक्स,
बट उनकी इंडस्ट्री में फ्लेक्स है कि उनके इवेंट्स के अंदर नहीं अगला बता रहा हूँ ना कि उनके इवेंट्स के अंदर उनके 5 या 6 इवेंट्स के अंदर नरेंद्र मोदी आए थे। बिल्कुल ही फ्लेक्स नहीं दे रही हो भाई, बिल्कुल ही फ्लेक्स नहीं। वो आदमी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहा है, वो किसका प्रेजेंस कहीं पे भी फ्लेक्स कैसा हो सकता है यार? ब्रो ये कुणाल कामरा का पॉडकास्ट नहीं है। मुझे एड रेवेन्यू चाहिए एटलीस्ट डाउन द लाइन। हटा दो इसको, हटाएंगे कुछ नहीं है। तो शी वॉज टॉकिंग एंड वी वर टॉकिंग अबाउट पब्लिक स्पीकिंग, क्योंकि दैट्स यहाँ पर भी ये टॉपिक यही है कि आई वॉज टॉकिंग टू हर हाउ टू स्पीक क्लियरली इन पब्लिक एंड विद यू वेर इन सिमिलर, मतलब प्रॉक्सिमिटी वहीं पर है कि इट्स अबाउट स्पीकिंग, पब्लिक स्पीकिंग, ऑब्जर्वेशन, बीइंग एबल टू टॉक। कोई आदमी ऐसा ऐसा क्या कीड़ा होता है, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इनहेरेंटली यू आर लिटिल डिफरेंट, क्योंकि fear of public speaking is up there and fear of death is number 3. I have fear of public speaking. I'm Okay. still, like, if you tell me, it's easier for me to write something at home, know that this is how it's supposed to be said, and then go say it on stage. It is tougher for me to just directly go and start talking. Does it make me anxious when I get on stage? Yes. I still have No, a bit even of if you're stage fright. elocuting, let's say reading, or you're just narrating something, a story. I can't read. No, of course, but No, not on stage. In general, since school, if you ask me to get up and read the textbook, I can't read. I get scared. अभी भी अगर मुझे OTP बोलना है, fumble while saying OTP. Like, I can't, मेरे numbers confuse होते हैं. Like, dyslexic? I don't know. इतनी privilege नहीं थी कि check करवा पाओ। नहीं, और अभी मुझे check कराना भी नहीं। Also, like, it wasn't this bad. या तो वो टाइम पे OTP था नहीं, but like right now, every day I'm giving like 2-3 OTPs and I'm always like, man, I'm fucking up 2 of them for sure. कुछ ना कुछ, अगर कल कहीं में था, the password was 020222 and I was like 2200, कुछ तो कर दिया मैंने, 2 बार ये मिस्टेक की, फिर तीसरे बार मैंने ठीक से किया है। तो like OTP जोर से बोलना, टेक्स्ट बुक पढ़ना, न्यूज़पेपर जोर से पढ़ना, I can't do it. But you had the willingness to step on the stage, right? It's a cool thing to do. This job. So were you the class clown, or you tried? Did you aspire to be the class clown? Yeah. Then you liked attention. I liked attention. Yes. I loved attention. Recent specials तो बहुत सारी मिल गई होगी। I loved attention. My mom made sure I participate in elocution, debate, all of that. तो मतलब अगर मुझे डर भी लग रहा है, मुझे मार पीट के स्टेज पे तो चढ़ाया जाता था कि तुम्हें ये जाके बोलना है. Then she made sure I actively participate in sports. So a lot of people saw me fail at multiple sports. What does that do for you? Does it free you or does it stifle you? I don't care. So it frees you. It frees me. Honestly, I'm very indifferent. Like if someone comes and judges me, I'll be like, yeah, sure, whatever. That's your judgment. That's your judgment of me today. That's your not objective judgment of my lifetime. So you have a thick skin, and I think that's inherently what you need to do to become a comic, especially in the kind of comedy that you do. Thick तो पता नहीं. It's not thick as hate much comments as... bother करते हैं? नहीं bother as in अगर कोई violent threat दे तो I'll be like, पागल है, कैसा कैसा बात कर रहा है, मतलब ये constitutionally गलत है, मुझे वो bother करता है. नहीं अगर कोई that's not an insult, that's a promise of action in the future. Someone says I'm bad, no, that's fine. The thing is, my comedy is not for everyone and not every comedy is for everyone. कोई गंदी वाली गाली देके चला जाए? बहुत मेरे को एक बार एक comment आया था, one of the funniest comments. गाली दे सकते हो? No, गाली नहीं है, which is what the creative part is. It is so creative. The comment was, ये आदमियों का female comic है. Which I don't know if you get what that. Dude, it is. I was like, this guy is so creative. And this कितनी लिटरेसी है इस कमेंट में? हाँ, कि उसको पता है how the sexism in comedy, how women are treated in comedy. He gets all of this. So he said, yeah, आदमियों का female comic है, and I was like, this guy is insane. You can't be funnier than trolls, I've realized, because they are just funny in 10 seconds. When was your first experience of bombing on the stage? The very first time.
The very first time I was supposed Like to- something that has an epic story. अबे कल रात की बात कल रात की मैं तेरे को लाजपत नगर की स्टोरी बता रहा था ना. I did 2 solo shows. Both of them went very good. Like people are coming to watch me. I'm delivering the service. They want to laugh. They laugh. I get off. I'm like चलो ये लाजपत जाते हैं और यहाँ पे नया 10 मिनट कुछ ट्राई करते हैं. Hmm. I haven't bombed this bad in like good 3-4 years. I started off with a new joke. It didn't work. I was like, cool. With who? In the club? There was an open mic happening somewhere. Acha, okay. In a proper room. There is no excuse. It's a soundproof theater studio. जहाँ पे 30 लोग बैठे एक डायरेक्शन में मुझे ढंग का माइक दिया गया है बस मेरे पे ही लाइट है. Everything on point is on No on excuses. paper. Yes, it's a banger room. I did the first new joke up top. It didn't work. Second, I was like, चलो पुराना कर लेते. Let me build the rhythm and then I'll do jokes. Hmm. From the second joke till the time I got on stage, I only did tried and tested jokes, and still nothing worked. Like it was as loud as this. ऐसा AC का आवाज आ रहा है. जैसा हम लोग हंस रहे वैसा आवाज आ रहा है. That's it, bro. Silence. And these are the jokes that have already worked, or these are In new material. half an hour before, आधे घंटे पहले मैं अपने 1 hour show में करके आ रहा हूँ ये jokes. और वहाँ पे लोग हंस रहे थे. Yes. So now, after the third show, the open mic show, I'm put in a weird spot where I'm like, am I performing in a bubble and do my jokes not work in regular audience? Because the guy before me was doing really well. It wasn't a bad show. The guy before me was doing properly well. Dude, I bombed so bad. I walked out of the room. I picked up my bag and I left. And I walked. Also, I don't know Lajpat Nagar. I'm not from here. I just walked in any direction. I was like, I want to get away from the venue. I walked somewhere. फिर कौन सा है वो New Defense Colony Market. I went there. I picked up butter chicken and I went home. And I ate by myself. Like, bad bomb. Does it get to me? It does. There are some bombs where you're just like, maybe stand up is not for me, and that happens on and off. Sometimes after a good show also you're like, stand up is not for me. Why? बहुत monotony है stand up में. थोड़ा सा explain करो, because कि you were तुम telling me this. एक joke perfect करने को बहुत time लगता है. Hmm. तो to try that one line which comes at the 12th minute, you have to repeat 11 minutes 30 seconds like a parrot. Hmm. Because in your head the structure works or you have finalized that structure. So a lot of it is parrot job and you have to do things to make it interesting for yourself, which I realized later. Like if I'm getting on stage and I know मेरे पास कुछ खास नया है नहीं try करने को, I won't remove the mic from the mic stand. I'll perform without touching the mic. Or I'm a right-handed person. I'll hold the mic in my left hand because I'm used to performing like this. मेरे ये हाथ को gestures की आदत है. ऐसा मेरे को gestures की आदत नहीं है. So this throws my rhythm off. Or else I'll sit and perform. I'll sit on a stool You're and doing perform. things, you're just doing variables for the sake of I'm making it doing interesting. variables because that makes me more comfortable on stage. Okay. I have to be the most comfortable on stage and that can only come by trying out permutation combinations. So I keep doing things. कभी stool पे बैठ गया, कभी stool पे बैठा और mic को हाथ नहीं लगाया. And people go to lengths to do this. I know a comic जो उल्टा खड़े रह के perform किया है. Like him and the audience, everyone is looking at the wall. And he's like, this is how I'm going to do my 10 minutes. He also was looking at people's feet. He's like, I won't make eye contact for the first 10 minutes. क्या मिलता है करके? उसके इसमें point था. जो मैं करता हूँ उसमें कुछ point नहीं है. He was trying to make a larger point. I'm just like, let's make it more exciting. Also because when you're not in your comfort zone, you are more conscious of the state you're in and उसमें शायद तुम्हें एक हाथ नई line मिल जाए. Oh, that way. Yeah, because you're more aware of what's happening. You're more present. अगर मैं ऐसे ही बात करता हूँ और मैं ऐसे ही जाके स्टेज पे खड़े रह के 10 मिनट कर लूँ तो मुझे पता है मुझे क्या बोलना है. I'm repeating and rehearsing. It's not a show. Yeah. It's a rehearsal that people are paying for. What does your average life look like as a comic? Let me put it in context what I'm asking exactly. When we have been talking, when the cameras were off, I was the one who was doing most of the speaking.
right now you are, but I was, and you were just observing, and I've met you like a few times, enough to see that you're mostly observing when you're not performing, let's say on stage or on camera. It's because I know if I open my mouth, people will figure out I'm stupid. I'll tell you what, it's easier to be smart for an hour on stage when nobody's questioning you. If I talk off stage, the act is not there. One, that, and second, I honestly have nothing to contribute. Like if I have something to contribute, then I will jump in and be like, ये सही है, ये गलत है. But isn't that the input that you're taking, where the observation comes from? It's also because look at it this way: you come from a different discipline altogether. So and you stay in a different geographical area, different climate, different everything. Politics, socio-economic background, हमारा बहुत कम चीज overlap करता है, except for our political inclination. नहीं अपने साथ मत डालो भाई, ऐड नहीं आएगा. So I'm like, I would love to hear what you have to say. I don't do a podcast. If you're talking about how to do a podcast, how to run a shoot, I would love to hear it out. My expertise is when we discuss. एक्सपर्टीज भी नहीं बोलूंगा, मुझे जो कुछ थोड़ा बहुत पता है वो कॉमेडी के बारे में पता है. तो जब कॉमेडी की बात होती है, आई कैन बी लाइक, दिस इज हाउ आई वुड हैव डन इट, नॉट दैट दिस इज द ऑब्जेक्टिव वे टू डू इट, बट मेरे प्रेफरेंसेस ये है. आई वाज गेटिंग टू दिस लिटिल इंस्टेंस वेयर आई वाज ड्राइविंग यू टू शाहपुर जाट, और हम गाड़ी में थे और पतली पतली गलियों से निकल रहे थे, एंड आई वाज कंप्लेनिंग अबाउट फ्यूल प्राइसेस, एंड आई सेड कि यार पेट्रोल बहुत महंगा पड़ रहा है और गाड़ी जो है 8-9 की एवरेज दे रही है और ट्रैफिक में तो और कम देती है और ईवी लेनी पड़ेगी. एंड उसी रात को, यानी 1.5 साल पुरानी बात है, 1 साल पुरानी बात है कम से कम. एक साल 1.5 साल, हाँ 1-1.5 साल पुरानी बात है. और उस दिन शो पे मैंने इन योर प्रॉपर शो जब हम वहाँ पे गए तो वहाँ पे यू सेड कि लोग ईवी ले रहे हैं क्योंकि पेट्रोल महंगा पड़ रहा है. But it's true, that's why my father also wants EV. Most of us want EV because हमें पेट्रोल महंगा पड़ रहा है. We don't care about the environment. So I'm talking about लोग EV का कांच नीचे करके गुटखा थूक रहे. Like ये लोग को नहीं पड़ा environment का. हम किसको झूठ बोल रहे हैं यार. देखो, one of your joke is about कि पेंगुइन का मुंह खुला हुआ है. वो जो डस्टबिन हमने देखे हैं पेंगुइन के जिसमें मुंह खुले रहते हैं और वो उसके अंदर आप गुटखा थूक रहे हैं या इस तरह की चीजें कर रहे हैं, कि हम सब लोग देखते हैं. हाँ. बट अपने को नहीं चमकता कि ये कुछ वियर्ड है, और आपको चमकता है. थोड़ा सा उस प्रोसेस को बताओ कि वन यू आंसर्ड कि इट्स योर जॉब, बट इज दैट ऑल? इज दैट, आर यू जस्ट ऑब्जर्विंग बिकॉज इट्स योर जॉब? I'll tell you what it is. The things that I've honestly observed and taken to stage have never worked. If a comedian ends up watching this, they'll come to know. जो बिट हम लोग पूरा शिद्दत से लिखते हैं ना, कि आज सुबह तुझे एक थॉट आया, तूने उस पर 20 मिनट लिख दिया कि ये ऐसा जाएगा, ये पंच लाइन, कॉल बैक, एंड दिस इज द बिट, fucking never works. It's always one of those random line that makes a bit. कुछ तो randomly आ जाएगा, एंड फिर तुम also रोज एक लाइन ऐड होती है, तब जाके बिट बनता है. बहुत रेयरली ऐसा होता है कि पूरा का पूरा बिट एक साथ आ गया. एक जोक की जर्नी बताओ मुझे आप. देख, ऐसी कोई सेट जर्नी तो है नहीं, बट 2, 4, 5, 10 तरह के पैटर्न्स देखे होंगे. एक जोक जो फर्स्ट बार ऑब्जर्व किया या कहीं से सुना या समझा, और उसके बाद हाउ इट एंडेड अप इन योर स्पेशल, तो उसको किस तरह डेवलप करते हैं, premise, punchline, फिर उसकी जो टेस्टिंग होती है on stages, open mics and everything. What does that look like? I'll tell you how I do it. Again, no objective essay. Yeah, there is no maths there. I will go on stage and the first joke that I do will be the newest joke, because that's a clean slate. Do you write a joke? Do I write a joke? I have a writing process that I follow. Personally, I have a writing process that I follow. Okay. I wake up and I try writing first thing in the morning. Wow. I am just thinking about I journal. I journal my thoughts. If that journaling amounts to a joke, then it amounts to a joke. Okay. But I write for an hour. I like writing. Okay. Nice. And when I say I like writing, I don't like writing. Like if you ask me to write a book or an essay or a letter, I hate that. I like writing for myself. Give me like a blank
page on doc or something, and I can type for an hour. I like that. I like freeballing. I like putting my thoughts to paper, because then I can see there is a pattern to my thoughts and where these thoughts are stemming from. I like journaling myself. That is, it might not amount to anything, it's just therapeutic that my thoughts are on paper. They are more real than they are in my head. And once I have them on paper, I can highlight things and I can make something out of it. Okay. So I write, अगर मुझे कुछ जोक मिला है तो मैं जोक जाके स्टेज पे करूँगा. अगर चला तो चला, नहीं चला तो नहीं चला. I give, depends on what the joke is. I decide उसको कितना टाइम ट्राई किया जाना चाहिए. If it's like a frivolous nonsense, then I'll be like, okay, cool. I don't. 2 बार ट्राई किया, बंद कर दिया. If it's something that I believe in, I'll be like 5 times, 10 times, 15 times. Then I'll forget about it. Then I'll be like, ठीक है, नहीं चल रहा है. Then randomly 6 months later, I'll be like, oh, ये यहाँ के context में fit हो रहा है. So there are, the oldest joke in my set has to be like 4 years old right now. That's not that old, or is it? Like, I don't know the language or the industry. I can go older also. The oldest joke, I've been doing it for 10 years. My oldest joke can be like 7 years old. I can go there also. I've just stopped doing it. They aren't online yet. I can very well fit them into my set. I just don't want to. So, weird exercise. Today, after you met me today, what is one observation or something that you saw that you could make a joke out of? कि तूने तेरे टेरेस पे एक रूम बनाया है जिसपे तूने ट्रांसपेरेंट एक्रेलिक शीट डाली है कि अंदर सनलाइट आए, जब एक्चुअली सनलाइट उधर आ ही रही थी. Like you covered a space up and then you put a transparent sheet so that sunlight could enter. So like I like observing these things. मैं मेरे दोस्त के घर पे गया हुआ था and he had done this. उसने बहुत सिमिलर चीज़ की थी जो मैंने भी बचपन में की थी. मैंने अपने we stayed on the top floor और मैंने मेरे बेडरूम के सीलिंग पे planets और stars लगाए थे. And I'm like, I can just break this ceiling and watch actual stars and planet. What the fuck is this thing that stops lighting up after 3 or 4 uses? This is phony. So I enjoy watching like simple contradictions. If I want to develop that eye, कैसे करूं? This I is really don't funny. I don't know if it's a skill everyone can have, and I'm not saying it's like a gifted skill और मुझे शेयर नहीं करना है. मेरे पास उतना स्किल सेट नहीं है कि मैं किसी को सिखा सकूं ये कैसे करते. बट देर आर बेसिक एक्सरसाइजेस दैट पीपल कैन फॉलो. अगर तुम्हें जोक राइटिंग सीखनी है तो फिगर आउट करो, get a problem. This is the problem. Figure out a solution for that problem, which is a real solution, and make sure what you provide is not this. It's a flip. Like 1 plus 2 equals 3. तुझे ये पता है? Now make sure when you're saying it on stage, when you're presenting it, 1 plus 2 equals X or 1 plus 2 equals pineapple. Make sure it's not 3. Because 3 is providing a solution. Okay. Make sure it's pineapple. Make sure it's spinach. Make sure it's cup. Whatever it is. Depending on what kind of comedy you like. तुझे कुछ dark पसंद है तो वहाँ पे dark डाल. तुझे political पसंद है, political dark. One of the joke writing exercises जो, because I like reading and talking about politics, pick up a newspaper, find 5 news articles, write jokes on that. The setups are given to you. You have to only work on the punchline. These are few exercises. मतलब अगर तुम्हें पंचलाइन नहीं मिल रहा है तो बस पूरा का पूरा हेडलाइन पढ़ लो. That's punchline enough. But डिमोनेटाइज कराएगा ये. So there are certain ways to. बेसिक राइटिंग सीखी जा सकती है. क्या तुम किसमें ह्यूमर इनकलकेट कर सकते हो? मुझे नहीं पता. I haven't been doing it for long enough for me to have an answer. 10 years is long, but it's not long if you look at it as. Who's the oldest comic in the industry?
has to be Veer or Saurabh Pant. Veer? Yeah, Is that Veer has been Tanmay also has been. I think Veer started before everyone did, and Saurabh Pant also like was one of the first and few and comics. what kind of difference are we looking from your timeline? Like 10 साल आपने बताया. They must I be. thought Sanjay Rajoura and Varun Grover are old. Grover is also old. Varun Grover is also. Yeah. So these people used to write for TV, for Uh, TV comedy shows, and Veer Das used to do theater abroad. And वो लोग ने ऐसा करके चालू किया. I think if I started in 2016 and I'm going to finish 9 years, start my 10th year, they must be doing it since 2009, 2008, 9. hmm. मतलब उनको 18-19 साल होने आए रहेंगे अगर तू देखेगा तो. Wow. They're like, if I've been doing it for 9 years, starting 10 in a few months, properly double of my time. Damn. Yeah. इतना टाइम हुआ है इंडियन कॉमेडी सीन में? एक्चुअली आई थिंक इन्होंने डेवलप करा है पूरा का पूरा सीन, हाँ. राइट? नाउ दिस इज अबाउट करियर. Should someone? Ask someone who has a career. Arey, come on, you're doing so well right now. Go for it. Ask the question, then I'll tell you. Should someone consider a career in stand-up comedy? 100%. It's like It's like any other. It's like any other profession. I'll be like, if you want to pursue it, pursue it. तुम it's not a zero-sum game, right? Yeah, it's not a zero-sum game, but it's something that you can try on the side also. It's not a full-time job. तुम Hmm. अपना डे जॉब करके रात को भी स्टैंड अप कर सकते हो. There is nothing called as a full-time comic, by the way. Hmm. I would like to tell people I'm a full-time comic. It just means मैं पूरा दिन टाइम पास करता हूँ और रात को जाके 1-1.5 घंटा काम करता हूँ. और 1-1.5 घंटा भी रोज नहीं रहता. कभी कभी हफ्ते में मैं 4 दिन बस 10 मिनट के स्पॉट करता हूँ. बट ये तो लोग बोलेंगे बहुत ज़्यादा प्रिविलेज है. मतलब ये तो पीपल वुड ट्रेड दिस भाई, क्योंकि 10-12 घंटे रोज वो कौन है, इन्फोसिस वाले. हाँ, नारायण मूर्ति और हाँ हाँ, वो काम करवाते हैं. एक तो बहुत सिंपल है उसमें, और एक काम करवाते हैं, कहते हैं क्यों बीवी की शक्ल क्यों देखनी है वे संडे को. हर श्योर मेरा प्रोफेशन थोड़ा लॉपसाइडेड है कि एफर्ट टू रिवॉर्ड स्क्यूड है, बट लुक एट इट दिस वे. पहले 8 साल मैं यही रोज के 10 मिनट पैसे बर्न करके कर रहा था. There is very little culture of a working comic in India. It's either you're an open micer who doesn't sell tickets, or even if you sell tickets, they don't amount to anything, or you're a viral A-lister. The working comic culture is just starting to happen. You can't just go to a comedy club, do 10-15 minutes, they pay you a token amount, and then your house runs on that. ये अभी जाके चालू हो रहा है. That sounds so foreign. अगर ये चालू भी हो रहा है, so the way you're telling me this is so foreign. कि Yes. परफॉर्मर को एकदम से Yes. आया पैसे दे दिए. Yes. So इस यहाँ ए लिस्टर्स होते हैं यहाँ पे, जो भी होते हैं, जो भी लोग आते हैं, all big names, पस्सी होते हैं, हर्ष गुजराल. All hard hitters. Yeah. All of them selling thousands of tickets. There are very few Selling the whole venues basically. Yeah. They can pick up any venue and sell that venue. Some comics are huge. Like उतना तो भाजपा के रैली में भी लोग नहीं आते. Yeah. अगर तू ऐसा लोकल इलेक्शन में देखेगा जितने कॉमिक्स पुल कर रहे हैं, some of these numbers are nuts. तो ये अब Thank God आपने अगला सेंटेंस नहीं बोला. I thought you would have been like, पर वो तो पैसे लेके लाते थे. But anyway. मैं बोलने वाला था. I know you. बट तू देख, ये 100 टिकट बेचो, Hmm. 200 टिकट बेचो, 150 टिकट बेचो, थोड़े से पैसे लो, फिर तुम वापस घर जाओ, मंडे टू थर्सडे कोई वेन्यू पे जाके 10-15 मिनट के नए जोक्स ट्राई करो. वेन्यू तुम्हें रोज का 500-1000 रुपए देगा परफॉर्म करने का, और ऐसे तुम्हारी जोड़ तोड़ के दाल गल जाएगी. वैसा अभी होना चालू हो रहा है, अभी तक पूरा हुआ भी नहीं है. वॉक मी 2 क्वेश्चन है मैं बोलना चाहूँ. पहले तो मैं, यू सेड 8 साल तक आपको ये करना पड़ेगा कि बट सबके लिए 8 साल नहीं है. 4 साल तो कहीं नहीं किया ना. 3 साल भी. आई थिंक बस्सी डिड इट इन 3 years, 3 or 4 years. चलो 3 साल ही पकड़ के लेते हैं अगर, क्योंकि मैंने बस्सी को देखा है. मैं SDA के अंदर, वहाँ पे हम चाय पॉइंट या चाय हाउस ऐसा कुछ है, तो वहीं पे
पनवाड़ी से कुछ खरीद रहे हैं या इधर से कुछ खरीद रहे हैं, और बस्सी आते थे और भी 1-2 लोग होते थे। अब बस्सी याद रह गए क्योंकि एक फेयरवेल, एक फेस्ट के लिए उनको लेने के लिए गए थे हम लोग, प्लेग्राउंड के ओनर से बात कर रहे थे और हम कह रहे थे कि बस्सी को फ्री में दे दीजिए, और उन्होंने कहा इसकी वीडियो आने वाली है। तो तब तक उनकी फर्स्ट वीडियो नहीं आई थी, और उससे पहले मुझे याद है मैं वहाँ पे था, तो मैंने देखा है कि भाई 200 रुपये में कॉमेडी देखोगे? It's called busking. You आ, go and busk audience members when you haven't sold enough tickets. या बट वो वहाँ पे, हाँ, नॉट सोल्ड इनफ टिकट्स, क्योंकि वहाँ पे 6 या 7 कॉमिक्स होते थे और 6-7 ही लोग होते थे। It's a culture in Bangalore and Delhi that people busk. Bombay used to have that culture. People have stopped busking, myself included. Like मैंने भी थोड़ा टाइम पहले busking बंद कर दी. ओके, But we used to busk. बट देयर People इज used दैट to काइंड ऑफ ग्राइंड इन्वॉल्व्ड इसके And it's not just India, it's everywhere. अगर तू ऐसा मेलबर्न जाएगा, हम्म तू एडिनबरा फ्रिंज फेस्टिवल में, that's a month-long festival where people from all over the world come to watch. So you have to stand on the road and flyer your show. You have to tell people, come for my show. You have to go to a comedy club, do like a banger 10-minute set so that you can stand outside and be like, 10 minute पसंद आए मेरे show पे आ जाओ. Go to a showcase show, showcase your talent, and then call them for your show where you make money, where people come and watch an hour of you. तो ये वाला ग्राइंड तो हर जगह पे है. ये वाला ग्राइंड बॉम्बे में भी है. मेरे वीडियोस डालने के पहले अगर मुझे 1 घंटे का शो करना होता था तो मुझे 1 महीना प्रमोट करना पड़ता था कि 15 लोग आ जाए, 30 लोग आ जाए. 30 आपकी तो आपकी पहली वीडियो को शायद 18-20 महीने ही हुए हैं. हाँ, मैंने 4 जन 2024 को डाली है. व्हाई डू यू थिंक आपको 8 साल ये करना पड़ा? व्हाई डिड यू अपलोड योर स्पेशल सो लेट, एंड व्हाई डिड यू हैव टू बस्ट योर एस लाइक, एंड बस्किंग ये सब करना पड़ा? मतलब 8, यू सेड हर एक के लिए वो विंडो जो होती है ना, स्ट्रगल की जो विंडो होती है, 8 साल नहीं होती, 3 साल भी होती है. मुझे बस कुछ अलग करना था अपने production wise, the way my video should look. I think a video is an ad of you so that people can come watch the full show. Not everyone's ad cannot be looking the same कि तुमने same comedy club पे shoot कर लिया, same 3 angle setup, same editor, same packaging. मुझे नहीं करना था वैसा. It was very different. And I was lucky that somebody came and saw me at the show. Then they told me they like my work. We became friends, and then he was nice enough to be like, you just come perform. Everything else is taken care of. Like, That was an expensive production. sure, yeah, it was. I'm telling you, somebody did me a favor of a lifetime. 2 people. The second, whoever has helped me produce my special, they have done me massive favors. Like, I'm properly indebted. To have a first video like that, लोगों ने Amazon से special पैसे लेके वैसे special नहीं किए. I'm very aware. Yeah. It's very high quality production, and I got very lucky. I take no pride, I have no ego about it, because if I had to do it by myself, my videos wouldn't look that great. तो मुझे पता है एक डायरेक्टर का स्किल सेट और एक कॉमिक का स्किल सेट अलग है, और वीडियो डायरेक्टर की वजह से अच्छा दिख रहा है, कॉमिक की वजह से नहीं दिख रहा है. सो फॉर अ कॉमिक, जितना भी आप अपने जोक्स को बैटल टेस्ट, एक तरह से अपना सेट बैटल टेस्ट करके आप जब उसका स्पेशल डालते हैं एंड दैट स्टार्ट्स टू डू वेल, उसके बाद आपकी करियर ट्रेजेक्ट्री इन टर्म्स ऑफ मीनिंगफुल वे स्टार्ट हो सकती है. दिस यूज्ड टू बी, ये ऐसा बाइनरी वाला कि वीडियो डालो और करियर सेट हो जाएगा. ये इट्स अ बाइनरी थिंग व्हिच यूज्ड टू हैपन प्री रील्स, because you had one shot to upload and make it. Right now that's not the case. The first special that I uploaded had some 45 reels. Yeah. I have 3 videos and I have 45 attempts for me to tell people go watch that video. I have 45 YouTube shorts, I have 45 Instagram reels, and I have 3 full-length YouTube videos. What I've uploaded right now, these are like 50 reels. I have 50 attempts to tell people go watch the 2 videos that I've uploaded. It's the volume thing, which is why I did 100 days, 100 reels, because I know that's a volume game. क्या डिफरेंस था in terms of the algorithmic traction in the follower count 100 days के बाद? I started off with some 6 or 7,000, and then I was at, I think, 25,000 in 100 days. in 100 days. So a good ROI, I think.
I don't know. I have no yardstick. I have only posted my work and I've only posted once I had something important to post. तो अगर तू 4 जैन 2014 के पहले देखेगा, I had not uploaded anything on my Instagram ever. If somebody had to compliment, they were sending messages to an account that had 0 posts, hoping that they would get a reply. And I was very much active. I was very much replying to people. I just did not know what to post. तो मुझे पता नहीं है क्या डालने पे कितना रिटर्न आता है. So what's a yardstick of of success for a comic? Followers होता है, show sold out होना होता है. मतलब और obviously binary answer नहीं है इसका. Like how do you measure success in your industry? In my, I don't know. कोई कोई लोग के तो हजारों टिकट बेच के भी सक्सेस फील नहीं हो रहा है. तो सक्सेस इज अ वेरी पर्सनल थिंग एंड आई एम नॉट टेकिंग डिग्स एट एनीवन. इट्स देयर इज अ void. 1,000 people laughing at you from 8 o'clock to 10:30, 11, and at 11:30 And all of them paying thousands. you're making insane amounts of money, but at 11:30, 12 you are back in your room by yourself. Why is that bad? No, you see the high and the crash that comes right after. That's a crash. You are not gliding down. You face that? At my level, yes. Maybe at 1,000 tickets I'm wrong. मैंने कभी बेची नहीं है. But at my level, sure, there are days where I'm like, तू तू जो भी तेरे दिमाग का रॉक स्टार कूल शाना जो भी तू है, वो तू स्टेज पे, तू स्टेज से उतरा रात के 12 बजे, तू वही है जिसका गाड़ी का टायर पंचर हो गया, ट्रैफिक में अटक रहा है. अगर तू रिक्शा में जा रहा है, साइड की गाड़ी तेरे पे कीचड़ उड़ा दी, लाइक यू आर अ फकिंग नोबडी. All right, and that's when you can't look at your Instagram and be like, "Why I have these many followers? मेरे साथ क्यों हुआ?" You're still a fucking commoner. You are still susceptible to everything that other people go through. Yeah, And because when we meet you guys, we feel like मतलब हमारे लिए तो when we meet you or any other comic, हमें लगता है कि भाई ये तो कॉमिक है, बड़ा कॉमिक है. और we look at you guys with a halo and we treat you special. क्योंकि हम तो एक ऑडियंस मेंबर ही हैं ना. But at the end of the day, you're also human. it's not even about human. तू ये देख, अगर मेरा शो है 8 से 10, 10 से 12, I get done at 12, 12:30. I eat dinner. I get done by 1, 1:30. I'm home, and I'm not sleepy because I'm still in that high. It's still coming down, and I have nobody to talk to. तू देखना, जो मेरा वर्क स्केड्यूल है वो बाकी लोग के वर्क स्केड्यूल जैसा नहीं है. मेरा वीकेंड मंडे ट्यूसडे वेंसडे है. फ्राइडे सैटरडे संडे नहीं है जब भी दुनिया पार्टी कर रही है. Makes sense. My chill days are the days when the world is working. Unless you reach a level of success where ये बस्सी ने बोला था, for me every day is a Sunday. मैं कभी भी टिकट डालूं, मेरी उतनी टिकट बिक जाएंगी. Yeah, Uh, वो तो अलग ही privilege है. yeah, also like whatever, he earned it. And that's true for a lot of comics. There are, Yeah. I think, Like I told you, मैंने खुद देखा है बस्सी को busking yeah, as you said there are करते like हुए. there might be 20-30 comics in the country जिनके लिए हर दिन संडे है. कभी भी उठ के कोई भी वेन्यू पे उंगली रख दो, वहां पे उनकी टिकट बिक जाएगी. तो if you are not at that level, you live by the reverse weekend वाला schedule, which तुम्हारा social circle अलग हो जाता है या restrict हो जाता है. Of course. uh, टूर कर रहे होते हैं आप. हाँ, टूर कर रहा रहता You हूँ. can't show up to events I sometimes. can't show up to events. I just थोड़ा isolating तो है. Fulfilling है. fulfilling तो हाँ 100%. अगर ये fulfilling नहीं है तो फिर तो मत ही करो यार. क्योंकि you get to say whatever you feel like, and I think a lot of people are just living with That's not true. But I get to say what I feel like because that's how I want to do stand up. I read the news bothers me, I talk about the news. There are people who read the news, they get bothered by the news, they still go on stage and talk about tiffin and school and whatever. I'm sure that's very depressing. To mask your opinion so that you can make money. And मैं अपने लिए today I am fulfilled with stand up because I am able to say what I want to say. Is it that bad for them? I don't know. I'm just saying that if I were in that place, I wouldn't be happy.
I wouldn't be happy that the only chance I have when people are willing to listen to me from that 8 to 10, 10 to 12 wala slot, the only time somebody wants to listen to me throughout the day, I don't tell them what I really think about. Do you I think it's the responsibility of a comic? No, it's not. I'm just saying. I'm drawing this from the fact that comedy is inherently anti-establishment. अपने यहाँ पे तो नहीं है, सब क्या प्रिविलेज अपर कास्ट लोग ही कॉमेडी कर रहे हैं. हमेशा उबर ड्राइवर पे ही जोक बनता है, हमेशा बाई पे ही जोक बनता है. तुम उबर के मालिक पे जोक बनाओ ना. अरे चलो अंबानी के बेटे को मोटा ही बुला दो, उतना ही स्पाइन दिखा दो. वो लोग तो उतना भी नहीं कर रहे. मैं तो बोल भी नहीं रहा प्रॉपर पॉलिटिक्स के हिसाब से जोक करो. अगर जोक करना है तो हमेशा रास्ते पे भिखारी है, उसका पेट बड़ा है, अभी फिर तुझे भूख कैसे लग रही है, मोटे खाएगा क्या. इट्स ऑलवेज मोस्ट ऑफ द कॉमेडी is along those lines only. Very little is punching up. Because the awareness of privilege, class, caste is not as high. Well, बॉम्बे में भी ऐसा क्या? हाँ, बॉम्बे में तो बहुत ज़्यादा है. I thought दिल्ली में ही ऐसा है. बॉम्बे का सीन कैसा है कॉमेडी का? Everywhere it's the same. I've traveled enough in 10 years to be like most places it's the same. लोग कहते हैं कॉमेडी खतरे में है, और हमने देखा था कि वो कोई थिएटर था, खतरे में तो उसको तोड़ दिया गया था आफ्टर कामरा साहब. कॉमेडी खतरे में है, और वो खतरा खराब कॉमेडियंस है. कुणाल कामरा के बारे में बात कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं. क्योंकि वही तो स्टेट्स वेन्यूज तोड़वा रहे हैं. कामरा वेन्यू नहीं तोड़वा रहा. आई नो. कामरा बिल्कुल ही वेन्यू नहीं तोड़वा रहा है. कामरा ने जोक मारा, आके किसी और ने वेन्यू तोड़ा. आई नो. तो खतरे में तो नहीं है. ऐसा तो हर ही आर्ट फॉर्म खतरे में है. ऐसा जो रास्ते पे बाखड़ा लगाता है वो भी खतरे में ही है. उसे भी आके कोई लोकल गुंडा परेशान करता ही है. तो ये विक्टिम वाले माइंडसेट से नहीं दिखना चाहिए कि खतरे में. इट्स कॉमेडी इज मोर फन व्हेन देयर इज मोर रिस्क. If everyone is allowed to joke about everything, then it's not a joke. Do you get a high out of cracking jokes on things that offends people? मजा आता है लोगों को? Here's the thing. I have a problem with the way it's framed. Do I get a kick out of offending people? No. Do I get a kick out of saying things people will disagree with? Yes. I am giving a joke. You are taking offense. I am not giving offense. मुझे उन्हें हंसाना है. देख, laughter is more powerful than offending someone. Because तुम offense कंट्रोल कर सकते हो. तुम्हें गुस्सा आया तुम कंट्रोल कर सकते हो. अगर तुम्हें हंसी आई कोई चीज़ पर तुम कंट्रोल नहीं कर सकते हो. Which is why the captions are like, try not laughing at this. Nobody says try not getting angry. That's so powerful. Yeah, so I would being able to do that. अगर तुम दोगले हो तो मैं तुम्हारे दोगलेपन पे अगर तुम्हें हंसा दिया, I made my point. We agreed on a service कि तुम्हें हंसना है, मुझे तुम्हें हंसाना है. मैंने तुम्हें हंसा दिया और मैंने मेरा पॉइंट भी रख दिया. That is more powerful than मैं जाके किसी के गांड में उंगली करूँ, वो भड़क जाए, ऑफेंस ले ले. I don't want to do that. I'm not here to offend anyone or give offense. If you take offense, we can sit and discuss it out. Let's see why you took offense. Let me put my point across. Let me make you understand how this works. तुम्हारे offense लेने से कुछ बदलेगा नहीं. शायद तुम्हारे डायलॉग से बदल जाए, शायद मेरे डायलॉग से बदल जाए. ये डिबेट किया जा सकता है, ये लोग सुनने लायक है कि नहीं. But am I up for discourse and dialogue? 100%. Am I there to offend just because it gives me a high? No. Fair. So, like, what did you think of the controversy about जो वेन्यू तोड़ा गया था? गलत ही है. कोई भी वेन्यू टूटना गलत है. कोई भी वेन्यू टूटना गलत है. कोई भी कॉमिक की सिक्योरिटी थ्रेट में लाना गलत है. पुलिस और नेता का काम लोगों को सेफ रखना होता है, उनको डराना धमकाना नहीं होता है. मैं तो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल आर्गुमेंट्स के हिसाब से बोल रहा हूँ कि अनसेफ फील होता है परफॉर्म करते हुए? नहीं. कौन से, लाइक यू वर बिल्डिंग अप टू समथिंग. देखो, कामरा ने पॉलिटिकल कमेंट्री करी थी. आप सिमिलर चीजें ही करते हो. तो डू यू एवर फील लाइक कि आपकी वीडियो पॉपुलर हो गई तो आपको भी स्टेजेस को सीक आउट करके तोड़ा जाएगा? होगा, तब होगा.
I can't be bothered by that right now. Am I scared of doing jokes? No. I don't want the venue to be broken down. मेरी वजह से collateral damage होएगा, मुझे थोड़ा तो खराब लगेगा ही, because वो किसी का business है, वहाँ पे 10 कॉमिक स्टेज पे चढ़ते हैं जिन्हें eventually खुद का करियर बनाना है, तो I don't want to be a barrier for someone. Having said that, I'm in full support of Kamra and what he did, and I'm very much against what he went through. He said that I'll not apologize, na? Yeah, nobody should apologize. अबे इनके नेता लोग रैली में गाली देता है जिनका वीडियो आया है, जर्नलिस्ट लोग पैनल पे मुसलमानों को गाली दे रहे हैं, वो लोग सॉरी नहीं बोल रहे, कॉमेडियन सॉरी बोलेगा? ये तो क्यों सॉरी बोले? तुम डराओ धमकाओ, वेन्यू तोड़ो। कामरा ने बोला था ना, कांच है टूट गया, वापस ठीक हो जाएगा, सॉरी क्यों बोलना है? ये कहाँ बोला था उन्होंने? कामरा ने पब्लिकली बोला है। हाँ, कामरा ने मेरे को भी बोला था, क्या पैसा ही है ना, द डैमेज इज ऑलवेज मॉनेटरी, इट कैन बी फिक्स्ड, and he's not being cocky about money. He's just, it's an ethical fight. You can't arm twist me into apologizing. Does that set a precedent to other comics, for other comics? ये जो हुआ अभी ये लोग वैसा ही बात नहीं करते, बाकी के कॉमिक्स तो वैसे ही बात नहीं करते, इन लोग का क्या प्रेसिडेंट है? I was calculating, there are like 10 political comics in the country, or 10 comics who talk about politics. This entire 10 हैं? I mean 9 है या 8 है, just touching 10. नाम बताना। कामरा, वरुण ग्रोवर, पुनीत पानिया, मंजीत सरकार, डैनियल फर्नांडिस, if I can count myself, और कौन है भाई? संजय रजोरा। वो तो कब से स्टेज नहीं लिया उन्होंने शायद, बट ठीक है। who else? अजीम बनत वाला, अजीम बनात वाला, how हाँ। did I forget अजीम? अजीम है, sometimes does political, sometimes doesn't do political, but एक्चुअली बहुत कम है। I'm literally struggling for the 10th name. पॉलिटिकल करते हैं, मैंने देखा नहीं। Here's the tricky part, man. There are comics who wouldn't want to be named. Yeah. So Not. Yeah, just beep out name because मुझे बोलने के बाद याद है, I don't think he wants to be termed as a political comic. Too many eyeballs. Even. Yeah, but that's the thing ना, मैंने अभी पॉडकास्ट पर नाम ले लिया, फिर मुझे याद आया, these people are actively staying away from politics. They wouldn't want to be named. But I'm literally struggling for the 10th name. तो महीप जी भी पॉलिटिकल बातें करते हैं कभी-कभी। I'm sure he does, because मैंने जितना भी कंज्यूम किया था before he became famous for the second time, it was like he had a stand. वो बता रहे थे कि उनके सेट के अंदर वो बहुत पॉलिटिकल बातें करते हैं। It's just that कि वो पॉपुलर नहीं होते, पॉपुलर होता है मम्मी कैसी हैं। Yeah, but हाँ, there are like 10, चल 12-15 से तो कम ही है. And again, we didn't have a woman in this list. I've thought of this list like a bunch of times. Because the consequence for a woman is very different. Oh God. सबके कॉन्सिक्वेंस अलग है, मेरे कॉन्सिक्वेंस अलग है, मंजीत के कॉन्सिक्वेंस अलग है, एक औरत के कॉन्सिक्वेंस अलग है, कामरा के कॉन्सिक्वेंस अलग है, वेन्यू के कॉन्सिक्वेंस अलग है, सबके प्रॉफिट्स भी अलग है, यहाँ पे वेन्यू के प्रॉफिट भी अलग है। सबसे ज्यादा किसके प्रॉफिट्स हैं? कॉमिक के, the A-lister makes like I just can't lie and be like the A-lister makes the most money. Okay. If you are selling tickets, you make money. I wouldn't lie and be like अगर आपको जनता देखने आती है तो आप पैसे नहीं कमाते, अगर आपको जनता देखने नहीं आती है तब सिर्फ वेन्यू पैसे कमाता है, तब आपको कुछ भी नहीं मिलता है. I am the service provider, I am the vendor, the audience is the client, the venue is the middleman. ऐसा कोई बिजनेस मॉडल नहीं है
जिसमें मिडिलमैन पूरा पैसा लेता है क्लाइंट से और वेंडर को पैसे नहीं देता है, एक्सेप्ट फॉर व्हेन यू आर डूइंग ओपन माइक्स. When you're the vendor, I'm the the comic vendor is the vendor. providing the service. The Hmm. audience is the client asking for the service. The venue is the middleman providing that service logistically. Hmm. When you're an open micer or when you haven't made it as a comic, the middleman makes the most money. Oh, Yes. and the comics don't Nobody get gets paid. paid. None of the comics get paid. Right now we are fighting to get paid. Right now we are like, give us like a token amount. But like, do they have the money? Like itna. Even if you don't have the money, don't do the business. Don't do the business at my cost. I'm providing my service. If I provide you a bad service, you have full right to be like, don't come and provide this service again. If I'm providing a good service, I can be like, मुझे मेरे हक का पैसा दो. तू ये देखना, अगर तेरा एसी खराब हो गया, तूने एसी रिपेयर करने वाले को बुलाया, वो एसी वाले ने एसी खराब भी रिपेयर किया, तुझे उसे पैसे देने हैं ना, बिकॉज उसने उसका सर्विस प्रोवाइड किया है. तो मेरे वाले केस में क्यों नहीं है? मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि अगर मैंने अच्छा परफॉर्म किया तो मुझे आज 10,000 रुपये चाहिए और कल खराब परफॉर्म किया तो मुझे 200 रुपये चाहिए. मेरा रोज़ का 500 रुपया बनता है, मुझे मेरा रोज़ का 500 या 1000 रुपया दे दो. ये मेरी सर्विस है, मुझे उसके पैसे चाहिए. ये हो रहा है? नहीं हो रहा है. हम वी आर फाइटिंग. देयर आर सम प्लेसेस Like you have to fight for this. I mean, fighting will be a strong word. We are begging for it at this point. But you guys make the venue, right? How do they have that kind of bargaining power? Because Do all venues have this kind of bargaining power? no, there are venues. There's one venue in Delhi. There's one venue in Bombay. They intend to pay comics. They are trying to pay comics in whatever capacity they can. Okay. Yes, like the venue in Delhi pays a certain amount of money per spot. एंड आई हैव फ्रेंड्स जिनकी रिकॉर्डिंग का कॉस्ट अगर 50,000 रुपया हो रहा है, उन्होंने 25,000 रुपया बस स्पॉट करके कमाया है, एंड दे ओनली हैड टू गिव 25,000 ऑन टॉप. 50% of the recording cost was taken care of just by performing at that very venue. So you're accustomed to how the venue works, you're more familiar and comfortable while recording, and 50% of the cost is taken care of. So these are the good venues. Good और bad का बात नहीं है. नहीं, पर ethical क्या These बोले? are the ethical venues. Ethical venues. But are these in majority or minority? अब माइनॉरिटी मतलब 2 या 3 ही है पूरे कंट्री में. 5 होंगे ज्यादा से ज्यादा. Seriously? हाँ, पूरे. I thought कि सिर्फ 4-5 बुरे हैं. मतलब पूरे कंट्री में कितने ही वेन्यूज होंगे. ऐसा क्लब देखेगा जहाँ पे प्रॉफिट्स होते हैं और जहाँ पे लोग आके परफॉर्म करते हैं, देखते हैं. पूरे कंट्री में 10-15 होंगे कॉमेडी क्लब्स. उनमें से क्या 3 या 4 पैसे देते हैं. मैं नाम भी कर दूंगा, बट एक बॉम्बे में हैबिटेट. हाँ, हैबिटेट है. यहाँ पे गुड़गांव वाला लाफ स्टोर है, दे पे. लाफ स्टोर पे हुआ था 25,000 50,000 वाला एग्जाम्पल. ओके. बैंगलोर में अंडरग्राउंड कॉमेडी क्लब है. वो होस्ट को परफॉर्म करने के पैसे देता है. बेसिकली देयर इज अ प्रोडक्शन जिनके अंडर आप कोई भी वेन्यू पे शो होस्ट करो, आपको होस्टिंग के पैसे मिलते हैं. तो there are places that. So the business model is evolving, इसका, hopefully. There is a discussion, and that's how the business model will evolve. And I think at some point comics will get paid, but I'll be lying if if I say we are getting paid, and you can be a working comic without uploading videos. That's very tough. You can't just go perform at a club and make money. Inherently, the club owner's interest is against you. Not putting it कि ये विलन है और हम हीरो है, मैं वैसे नहीं बोल रहा हूँ. They are like, we are providing everything, and when something is going to be broken down, we become the punching bag, so we get to keep the profit. That's their argument. My argument is nobody would come to break it down if we don't perform there to begin with. So we can't get anything at all. आप majority club owners देख लो country में, all of them are extremely privileged people who are not living hand to mouth. If you look at majority of the working comics or comics who are attempting to be people who are attempting to be comics, they are not doing that well. Your one emergency or accident or a lawsuit, or not even a lawsuit, मैं बोल रहा हूँ अरे तुम्हारे पे नहीं, तुम्हारे माँ बाप के साथ कल कुछ हो गया. One medical emergency away from you quitting comedy. Because then you have to go back and manage your finances. None of the club owners, the big club owners, none of them are in that state.
मैं तो मेरे बेसिक पैसा मांग रहा हूँ कि अरे अगर मैं घर से 200 रुपये कैब का दे के आया और 200 रुपये दे के वापस जा रहा हूँ, तो मुझे 500 रुपये तो दे दो कि मेरा 100 रुपये बने उस दिन। मैं उधर आके परफॉर्म भी करूँ, खाना भी ना मिले, ऊपर से 500 रुपये घला भी दूँ। मतलब रिफ्रेशमेंट स्नैक्स कुछ भी नहीं होता? मतलब इट्स वेरी वेन्यू डिपेंडेंट। कोई कोई वेन्यू के पास F&B ही नहीं है, तो तुम उससे पैसे के अलावा कुछ मांग ही नहीं सकते हो। तो फिर तो आप पे 2-3 साल का बैकअप होना चाहिए, अगर आपको कॉमेडी करने आ रहे हो। Which is why a lot of comics do job and comedy at the same time, and they Yeah. only quit their job once they make as much money through stand-up or like 10-20,000 more, as much they're making from their job. That's when they are like, all right, my finances are now, I know how to live in 80,000 or 60,000. I'm making 120, 150. I can go back to 60 because that was my base to begin with. Now let's try making this 60 or 80 just through comedy. Got it. Also, when you start off, you have to pay to get on stage. What? Yes. It's a very classist, gate-kept art form in most of the first year places. कि अगर आपको स्टेज पर चढ़ना, आपको परफॉर्म करने के 250 या 300 रुपये देने पड़ते हैं, जिससे आप 4 मिनट करो, आप अपना 4 मिनट करके मटेरियल बिल्ड करो, फिर 6-8 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद, आपके स्किल सेट और आपके नेटवर्किंग पर डिपेंड करते हुए, you get to do 8-minute spots where you don't have to pay. But like if you have to try your jokes say 50 times before getting on stage, and the cost of getting on stage is 200 rupees, so Wow. you spend like 10,000 rupees to practice those 4 minutes. बहुत लंबा gestation period है हाँ, इस आर्ट में। and then of course you will see comic uploading reels that are half baked, और तुम्हें वो Instagram पे नाचते हुए दिखेंगे. Like they'll do whatever it takes to recover that 10,000. कि कोई तो मुझे पहचाने, कोई तो मुझे परफॉर्म करने का 10,000 दे, एक कॉलेज में बोला के 5,000 दे दे. For how long do I keep investing in this well with no hopes of return? So to be a good comic, you have to become an influencer ultimately. No, to become a known comic, you have to become an influencer. Good is very different. Yeah, to make money, Dude, there were to sell out. banger comics who quit stand-up because they weren't famous. And there are famous comics who are not good at all. Fame and good is not correlated. तो अगर आपको अच्छा बनना है तो अच्छा, you get on stage, you try jokes, you do your due diligence, don't copy, try something different, perform at different venues, don't make one venue or home ground, don't be comfortable and complacent at a place. Basic चीज़ें, you can improve as a comic. Go on tour, talk to comics from different cities, go understand कांदा, प्याज, गोलगप्पा, पानी पूरी, ये सब बेसिक नुआंसेस समझो कि तुम जब ट्रैवल करते हो तुम्हारी लैंग्वेज चेंज होती है. There's so much in this. Yeah, like when I go to Bangalore, the first time I went there, I went and did some Bombay jokes. They had fucking no clue what Bombay references are. But only when I go there, I realize that these 2 minutes that destroy in Mumbai, don't work in Bangalore. So you travel and you learn. जैसा ये बॉम्बे मुंबई का, unless you come to Mumbai, you won't come to know how big of a discussion this is. Someone from the other state and another city needs to come to Mumbai for them to be like, oh, Mumbai बोला जाता है, बॉम्बे नहीं बोला जाता है, नहीं तो उस पे लोग चिढ़ते हैं. Actually, इस पे चिढ़ते हैं लोग? Yeah. People like Mumbai? People like Mumbai because the name has been changed due to political reasons. And वो तो ब्रिटिशर्स ने चेंज किया था ना? नहीं, मुंबई 90s में चेंज हुआ, 1990s में by the शिवसेना. बॉम्बे स्टेट हुआ करता था जिसको बॉम्बे बनाया, और बॉम्बे को फिर मुंबई बनाया. तो ये सब के nuances ट्रैवल से ही पता चलता है. Yes, these nuances. तो बेसिकली जो लोग सोचते हैं कि उठो स्टेज पे जाओ बकचोदी करो, हम दोस्तों में बकचोदी कर लेते हैं, स्टेज पे भी कर ही लेंगे, उनको एक बहुत भयंकर रियलिटी चेक मिलेगा. नहीं, कभी-कभी लोगों की दाल गल जाती है. Sometimes that works and they think that's how it's done. मैं वही तो बोल रहा हूँ, ये मेरा प्रोसेस और मेरा अंडरस्टैंडिंग है. अगर तुम ये फॉलो करो और तुम फेल हो गए तो मुझे मैसेज मत करना. Like this is not a working, ये कोई प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट नहीं है कि अगर आपने ये फॉलो किया तो ये चलेगा ही चलेगा. मैं बस बोल रहा हूँ ये 10 साल में मेरी अंडरस्टैंडिंग रही है कि दैट this is how it works. This is how it worked for you. This is how it, yeah, this is what my understanding is. This is how it worked for me. Then this is what I've observed my peers do. This is what I've observed the venue do.
mostly sit and take money from us. On that horrible note, thank you so much. By the way, it's 5 o'clock. कितने बजे पहुंचना था? Mother चौथ बताना. 5:30 5:30 बजे पहुंचना था. 5 बजे पहुंचना था. 6 बजे का शो है, जाके साउंड चेक करना है और मेरा एक और इंटरव्यू है उधर. So the journalist is waiting. पहले उबर बुक करो, मैं बंद करता हूँ. गाइस थैंक यू सो मच. पहली बार 9 एपिसोड कर लिए हैं. यहाँ तक वैसे कौन देख रहा होगा घंटा, पर 9 एपिसोड कर लिए हैं. थोड़ा सा प्रूफ दिखा दिया यार. सब्सक्राइब कर दो, अब तो भीख मांग ही सकते हैं. बाय तो बोल दो. बाय बाय बाय. मेरे को कैब बुक करना है.